Sardar Dilbag Khalsa. I am currently sixth year doctorate student with IIT Bhubhaneswar. Sixth year IIT student at IIT Bhubhaneswar. So, okay. Hello everyone. I am Sardar Dilbag Khalsa. I am sixth year PhD student in physics, and I am working in quantum mechanics and machine learning. Previously, I have completed my master's from Indian Institute of Technology, Mandi, as a physics, and I was a chemist there. Synthesis, lots of chemical stuff like nanowire. So today it's a stand-up comedy. How scientific minds mock you with the language and literature. So suppose I am Mr. Schrodinger. Okay, I am Schrodinger, and हिंदी में जो यहाँ पे है वो सिर्फ दिलबाग सिंह है. ओके, टू टेबल्स. सो दिस चेयर विल बी इंग्लिश. यहाँ पे हिंदी से, ठीक है. सो लैंग्वेज कैसे जरूरी है, बहुत ही बेसिक से यहाँ चलते हैं. Schrodinger cat. Okay, it's dead and alive simultaneously. Means जो cat is dead and alive simultaneously until the measurement is observed. So how this affects the language? Okay. अब हम बहुत सिंपल से समझते हैं कि कैट मतलब बिल्ली. ओके, बिल्ली रास्ता काटा, लोग परेशान हो जाएंगे और अंधविश्वास या जो भी है वो मुड़ जाएंगे. ओके, कैट मीन्स बिल्ली, and in English cat is sometimes referred as pussy. Okay, people call it pussy. Okay, and pussy is associated with a genital organ of female. Okay, so if somebody is talking very clearly and very in English, and he is referring to a cat, uh, billy, and a pussy, so it's humor. But when it comes for balance between male and females, if a female is qualified, so she will resist the term pussy because she understand it. She may have a different interpretation of same words. Okay, सेम चीज को भुवन बम ने कवर किया है, बट वो थोड़ा वल्गर है. हम उसको सही तरीके से पेश नहीं कर सकते ऑडियंस को, क्योंकि वो ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाता है. वो कॉमेडी के लिए अच्छा है लेकिन नॉलेजेबल भी है, बट इट्स अ क्वांटम वर्जन. नाउ इन हिंदी में हम अ, बिल्ली को लिखते भी बिल्ली हैं, बोलते भी बिल्ली हैं, और वो बिल्ली ही होता है. बट इंग्लिश में CAT कैट, DOG डॉग, टू TO2, GO गो. ओके, we write something, if we pronounce something, and in हिंदी हमारे पास 52 अक्षर होते हैं. इंग्लिश में हमारे पास 26 अक्षर होते हैं, जस्ट आधा. और एक्चुअली ये क्वांटम मैकेनिकल कोड्स होते हैं लैंग्वेज में. हमें लगता है कि लैंग्वेज ऐसे ही डेवलप हो जाता है. अब जैसे कि कर्नाटका में तुलेश्वर, it seems like a god, but tul means genital organ in Kannada. So if a person goes from Chhattisgarh Hindi background to Kannada background, he will be mocked based on his name, because he need to change the name. It's a real event. So why the scientific minds of all over the world, the best technocrat, the best literature workers, they create the language based on
uh, capturing the dominance. Okay, they are not creating the dominance. Okay, so in coding, we use binary language, 0 and 1, and it is capable of generating more and high quality of intellect as you can observe in ChatGPT. You may be heard of only the free version of ChatGPT, but YouTube also has a premium version of lots of things. Google also has premium version thing. So the AI has now gained the intellect more than a common human being. Okay, they can write very well. They can generate good grammatical English. They can use a highly scientific words. They can write equations, but human consciousness is different. Human builds. AI can't give you a roti. Okay, okay. Now I have to change the again. So, Mr. Schrodinger, why you proposed the Schrodinger cat based on life? Okay, I need to explain it. Every scientific mind or any person has a natural tendency. He writes something, but people change their interpretation. The Schrodinger cat that the I proposed, the Schrodinger, as I'm a Schrodinger, so I proposed it based on my mocking the reality. But currently, the Schrodinger cat, the macroscopic version of superposition becomes real as string theory predicts the multiverse. Okay, okay, Schrodinger. सो सेम चीज़ तो वेदांत भी कहते हैं, फिलॉसफी भी कहते हैं। तो आपने नया क्या किया? ओके, ठीक है, मैं हिंदी में बताऊँ। नाउ आई एम सपोज वेदांत मांडव्य उपनिषद में आ जाते हैं हम। पता नहीं कौन लिखा मांडव्य उपनिषद। माया के बारे में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। मुझे तो एग्जैक्ट राइटर और एग्जैक्ट कुछ नहीं मिला। बस कुछ संस्कृत के ट्रांसक्रिप्ट मिले जिसको मैंने ट्रांसलेट किया। तो उसमें कुछ 7 वर्जन 7 चीज़ मतलब 7 श्लोक मुझे समझ में आया। मांडव्य उपनिषद ये कहता है कि यह जीवन एक माया है और माया में आपको फँसाया जाएगा, गिराया जाएगा, आपका टेस्ट किया जाएगा ताकि आप स्ट्रॉन्ग बनो। और इस खेल में वही विजेता बनेगा जो अपने आप को साबित कर पाएगा। यह खेल कोई नियमबद्ध नहीं है, यह माया है। ओके, यह सिमुलेशन है, ये एक गेम है, ये एक वीडियो गेम है, वर्चुअल रियलिटी की तरह। सो अभी मैं मांडव्य उपनिषद को ट्रांसक्रिप्ट कर रहा हूँ। लिखा किसने मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा है। मैंने एआई ट्राई किया है, बहुत एक्सट्रीम वर्जन वाला, मैनुअल एआई, वो मशीन वाला नहीं। ठीक है, वो मेटा का एआई यूज़ किया है। सो वो मांडव्य उपनिषद की बातों को सही कहती है। Now let's me become the father of string theory, Gabriel Veneziano. He proposed the string theory first on the first paper, and now currently I am Gabriel Veneziano, and now the Gabriel Veneziano proposed the string theory with the help of beta function to predict the strong linear force. Okay, the strings. He found that some kind of strings are there in the nucleus of a strong nuclear force. His paper, my paper, as I am Gabriel Vincent, my paper was suspended for 7 years, remained in dustbin for 7 years. I published the paper publicly, but nobody actually listened to my paper. Why nobody listened to my paper? Because my idea was original, and I was claiming extra more dimension of space and time. Only the space. So there will be also what's new? Kaluza Klein has also predicted the extra dimension of space. The Klein, Kaluza, and Einstein used his theory, and even Minkowski
extended the idea to four-dimensional universe. Okay, so how Gabriel Vinciano, your idea was different from Kaluza client. Okay, so Gabriel responds. Gabriel Vinciano responds that he currently he is a very famous scientist. When he was doctored, he was rejected, but now he is currently a very famous scientist. He is associated with Sun. Okay, so the string theory says that this universe is 10 dimensional, and the superstring theory says that this universe is 11 dimensional. And this 11 dimensional perspective was framed by and claimed by and brought by Edward Wheaton in 1995 around. And he has used the same conjecture. Ashok Sen, the Indian professor who got the fundamental breakthrough prize nearly 10 years ago, I think around 2012. And he is some kind of, he clearly says that I am atheist. Okay, so now let me become the Professor Ashok Sen. I don't have a first time I'm touching an Indian philosopher and Indian scientist. He is great person, but he is an atheist. So I want to, I actually, I don't want to meet him personally because I don't have that much potential to defend or attack his atheism principle. But I want to just ask one question to Professor Ashok Singh. I don't know whether this video will reach to him or not, but I have contacts with him because his student is the faculty in my institute and he is working on string theory. And Professor Ashok Sen is a leading string theorist all over the world. However, he don't get the haven't get the Nobel Prize because string theory is remain in the mathematical domain. Okay, it don't have the principle of testability and verification. Okay, so अशोक सेन जी का कहना है कि वो कोई देती या कोई यूनिवर्सल चीज पे विश्वास नहीं करते हैं। एक इंटरव्यू मैंने देखा है, हो सकता है वो एडिटेड हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि आई एम एथिस्ट। बट मुझे लगता है कि अशोक सेन सर एथिस्ट है नहीं। वो बोल रहे हैं कि वो एथिस्ट है, लेकिन वो खुद आ, किसी स्ट्रॉन्ग पावर को मानते हैं। एथिस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप गॉड को नकार दे रहे हो सकता है कि गॉड नहीं हो, बट देयर मस्ट बी अ सिमुलेटर। Simulator hypothesis is also there. Simulator hypothesis is proposed by the computer programmers. I don't remember the exact name, but I will. You can check the name. Okay, now let me become the Professor Roger Penrose. He is Nobel laureate. Okay, I don't have capacity to talk on behalf of it. And now let me become the Roger Penrose. Okay. So Roger Penrose's famous work on 1968 physical regulator was published and on gravitational collapse. A good a kind of how time and space and a beautiful picture. A diagram is there. How light bends, how gravitational things works, how black hole forms, how light got captured after the event horizon. Okay, so he explained the theory of everything with gravitational collapse conjecture, and this is the framework of modern physics. Okay, modern physics regarding modern physics regarding uh, interpretation in quantum mechanics. So now let's talk about Copenhagen interpretation. Okay, so this is my first conjecture that I don't agree with Copenhagen interpretation. I don't believe that wave function actually collapse. I am sure enough that wave function doesn't collapse. It exists in infinite dimensional reality.
and we are living in infinite dimensional plane. Okay, life is one. Definitely, life is one. And let me tell you a story. Okay, I have checked whether the God exists or not publicly in Indian Institute of Technology Mandi. It was very controversial. Uh, I checked I did the scientific experiment, but people understood it like some kind of mental issue. Okay, because there was some kind of uh, nudity in a closed space. No person was there because people say that if you want to meet the God, then you have to check the professor room. Okay, your guru. So I test this conjecture. The door was completely locked. Nobody was there, and my professor is very good. He is a professor. He is Professor Suman Kalyan Pal, and he is a very good professor. Okay, his doctoral background is from Indian Institute cultivation of science, and he is amazing professor. He guided my master thesis, so I just checked the hypothesis whether that door opens or not. The locked door. It was locked. So I was doing the experiment. I want to check whether that door can open or not. I did. I knocked, checked, doesn't open. But in whole campus, there are lots of security guards, CCTV footage. All got surprised what Dilbag is doing because he is knocking a door which is locked. So they think that he is in some kind of trouble. But I was doing my science experiment regarding whether the God can come in front of me or not. It didn't come. Okay, it didn't come. So I surrender myself regarding clothes and everything only for few seconds to believe to think that whether this my clothes or non-natural thing is responsible for non-opening the door. So I did that also. Then a security guard come. I was in full dress. He got feared and ran from me. Okay, so he did lots of complaints. People get organized. People thought that Dilbag has some mental issue. Okay, but I was completely fine and natural. Experiment. Because experiment has no limits. Exploiting any. I was not damaging anything. I was not breaking the door. I didn't broke the door. I didn't hit anyone. I come when my experiment was over. I just come with fully dressed. Okay, nothing, anything, fully dressed, but silently. And I wanted to go to my room because I wanted to sleep. But social structure is very smoking. So the seniors come to help me. Now, in their perspective, I was in some kind of high. They felt that I have taken some wrong medicines. And the point is that those days Diwali celebration was there, and drugs and ganja and alcohol was highly available in the campus. But I didn't took anything. I just eat one laddu given by one of my colleagues. He was also MSc Physics, and I don't know what was the ingredients, what was there in the that laddu.
So it was not. It was that after eating that laddu, I got very high tempered, very aggressive regarding system, regarding authentication, because that laddu excited me. It filled with me with anger. I am not sure what was the ingredient, but that laddu was. I'm sure that laddu was as the ganja or anything. I'm sure that was religious sended people, so that they want to, as I am from Sikh background, so it was clear case of some kind of manipulation, as I have raised lots of complaints regarding Indian Institute of Technology Mandi from the day one. I even said a professor that you don't know how to teach, because I have studied from MIT open courseware free of cost in the university, every lecture, every department. It is available in YouTube and free of cost. They teach very beautifully. Okay. It's warm now. I need to remove it. Okay. So my point here is not regarding mocking anything, but वो जो कहते हैं ना, पीके में कि कौवा टाई पहन के नंगा बैठा है। तो अगर टाई पहन के बैठेगा तब कौवा डिफरेंट लगेगा। और मैं कोई एलियन वेलियन नहीं हूँ भाई, यही जन्मा हूँ। तो पीके में तो वो एलियन था, ठीक है। मैं कोई स्पेस नहीं आया हूँ, बाटा पारा का जन्म हूँ, इंडिया में रहा हूँ, और आज तक कोई विदेश गया नहीं हूँ। हाँ, ये लिख कोई बस बस से निकाल दिया होगा तो उसका पता नहीं, फ्लाइट से गुजारते हो पता नहीं, क्योंकि मेरे फ्लाइट में जब फ्लाइट में चढ़ता हूँ तो वो पता नहीं किधर से किधर रिडायरेक्ट हो जाती है, मुझे भी नहीं पता क्यों रिडायरेक्ट होती है, क्यों फ्लाइट चेंज होती है, मुझे कुछ नहीं पता। क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत अच्छा खासा सबूत और डेटा है मेरे खिलाफ, और मेरे पास भी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत सारा डेटा है कि कैसे एजुकेशनल फ्रेमवर्क को गवर्नमेंट और मेडिकल हॉस्पिटल्स मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन उनकी समझ अलग है, समाज की अंडरस्टैंडिंग अलग है। समाज एक्चुअली में अब क्वांटम बाइस्ड हो गया है। समाज में अब इंटेलेक्ट खत्म हो चुका है। समाज में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी 90% लोगों का डैमेज हो चुका है। ना वो सोच सकते हैं, ना बोल सकते हैं। हाँ, बोलेंगे भी तो नॉनसेंस बोलेंगे। हाँ, टेक्निकल, क्वांटम मैकेनिकल, इंग्लिश और कोडिंग के टर्म्स में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि लोग रटने में वो दे रहे हैं, और मैं वो फॉलो नहीं किया हूँ। मैं हमेशा फुल टेक्स्ट बुक पढ़ता हूँ, लाइन टू लाइन, और उसको रंग देता हूँ। मैं टेक्स्ट देख भी सकता हूँ। सो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एजुकेशन पॉलिसी को बता रहा हूँ कि हमारा एजुकेशन पॉलिसी कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हैंड रिटन चीज़ें शुरू हो जाना चाहिए, कोई ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन में क्या होता है कि हम सीट अलॉटमेंट, कोचिंग सेंटर्स फॉर्म भरते हैं, सीट अलॉटमेंट ऐसा करा देते हैं कि किसी कंप्यूटर का सिग्नल फास्ट है, किसी कंप्यूटर का सिग्नल स्लो है, किसी को फर्स्ट क्वेश्चन एकदम टफ दे देते हैं, किसी को फर्स्ट क्वेश्चन फुल टॉस दे देते हैं, किसी को सरल सरल क्वेश्चन फर्स्ट पेज में दे देते हैं, किसी को टफ टफ क्वेश्चन फर्स्ट वन में। तो इंटरनेट में तो मैनिपुलेट कर देते हैं। हैंड रिटन लो, 50 पेज भरवाओ, जिसमें ज़्यादा लिखने की क्षमता होगी, जिसमें ज़्यादा इक्वेशन को डिराइव करने की क्षमता होगी, उसको आईआईटी दो, उसको यूपीएससी दो, उसको कोई कोचिंग सेंटर दो। जो लोग क्लरिकल वर्क हैं, 4 ऑप्शन को टिक करते हैं, उनको क्लरिकल जॉब दो। यहाँ पे जॉब का सिस्टम ही पलट दिए हो आप। आईआईटी उनको दे रहे हो जो रट रहे हैं, टेक में उनको बिठा रहे हो जो रट रहे हैं। कोचिंग सेंटर पूरा पैसा ले लेता है, गवर्नमेंट का, राष्ट्र का पैसा लोगों का जमा पूंजी कलेक्ट कर लेता है। कोचिंग सेंटर के नाम पे बड़े बड़े आईएएस, आईआईटी, मेडिकल के
सीट्स है, और पूरे मेडिकल पेपर्स, आईआईटी के सिस्टम और रील सब चीज पूरी तरह से लीक हो चुका है, क्योंकि ऑनलाइन में जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, वो क्वेश्चन कोचिंग सेंटर वाले किसी तरह से घुस के साठ गांठ करके निकाल लेते हैं, जो प्रोफेसर सेट करने वाले रहते हैं। क्योंकि जब पेपर सेट होता है तो उसको उस पेपर को एक आईआईटी का प्रोफेसर सेट करेगा, 10-15 प्रोफेसर की टीम। फिर उसमें एग्जाम भी तो वही लोग देंगे ना, एग्जाम भी तो लिखा जाता है। मेडिकल का पेपर अगर सेट होता है तो सेम पेपर को 10 लोग सॉल्व करते हैं बैठ के कि ये पेपर सही है कि नहीं है। तो नकली चकली लोग जो लोग उसमें होते हैं, क्या कहते हैं, क्लरिकल वर्क, टेक्निकल स्टाफ, वो लोग कोचिंग सेंटर के वो होते हैं, अ, उनके याद करने की क्षमता बढ़िया रहती है। वो वो वही पेपर लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, जब आंसर बताते हैं तो उसको रट लेते हैं और पेपर कोचिंग सेंटर को दे देते हैं। कोचिंग सेंटर को पेपर आते हैं तो कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर 4 साल बच्चों को रगड़ते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, हाँ, बच्चे को मेहनत करवाते हैं। बाद में टेस्ट सीरीज के नाम पे टेस्ट सीरीज दिलवाते हैं, और बीच बीच में जो क्वेश्चन आईआईटी में आने वाला रहता है वो क्वेश्चन को भी डाल देते हैं। तो बच्चा धड़ाधड़ वो क्वेश्चन सॉल्व करता है। फिर जब जेई मेंस या जेई एडवांस की बारी आती है तो वो तो क्वेश्चन पहले से देख रखे हैं। जो लोग ज़्यादा रट रहे हैं, जो ज़्यादा रट पाएँ, जो ज़्यादा याद कर पाएँ, वो लोग फट 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 टिक करके निकलते हैं। वो पेपर को पेन पेपर में डिराइव ही नहीं करते हैं, वो लोग पेन भी नहीं उठाते हैं। सुने होंगे ना कि आईआईटीएन पेन नहीं उठाते हैं, तो ये एक्चुअली आईआईटीएन की तारीफ नहीं है, ये आईआईटीएन की बेइज्जती है। अगर आईआईटीएन क्वेश्चन देख के पेन पेपर में 6 पेज डिराइव करके आंसर नहीं निकाला तो वो आईआईटी डिजर्व नहीं करता। आईआईटी टेक इंस्टीट्यूट है, हमको बनाना है, खोज करना है, हमको खरीदना नहीं है, इंपोर्ट नहीं करना है चाइना से माल की ये पार्ट दे दो वो पार्ट दे दो। हमको खुद वेल्डिंग करना है, खुद जोड़ना है, खुद मजबूत बनाना है। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, लेकिन फिर ये लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि my English is more technical and quantum mechanical, as my perspective is more simulated based on machine learning framework. So my technical and I have lots of jargons, but in हिंदी मेरे पास कम jargons है। ओके, सो अब हम फिर से कॉमेडी में ही बात आते हैं कि ये पेपर लीक कैसे होता है। पेपर लीक करने का तरीका बहुत सिंपल है। एक टैलेंटेड स्टूडेंट को ऐसे कोचिंग सेंटर में डालता, ऐसे एड्रेस में दे दो एग्जाम जहाँ पे वो पहुँच ही नहीं पाए। ट्रेन लेट, कार लेट, पैसा लेट, उसके पास पैसे तो रहेंगे नहीं। और जो रिच पर्सन है वो तो पेरेंट्स को लेके 3 दिन स्टे करेगा, और जहाँ पे एग्जाम सेंटर होगा उसके 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में नहीं, पैदल उसको कार से एसी से पहुंचा देंगे। उनकी एंट्री भी एकदम लाइन में सबसे पहले 4 लोग खड़े होके एंट्री भी करा देंगे। लेकिन एक गरीब बच्चा है, वो अकेला जाएगा, लिफ्ट लेगा, क्योंकि उसको कोचिंग से उसके पास तो एड्रेस है नहीं, और एक ही नाम के 10 इंस्टीट्यूट। अब आईआईटी नाम के आईटीआई और आईआईटी में कितना फर्क है, तो आप बताओ कितना फर्क है। आईआईटी, आईटीआई है तो जमीन आसमान का अर्थ, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि आईटीआई आईआईटी से बेहतर है। आईटीआई वाले कम से कम पंखा, कूलर, फ्रिज जोड़ तो देते हैं ना, आईआईटी वाले कुछ नहीं कर पाते। मैं पढ़ाया हूँ बीटेक वालों, वो लोग सिर्फ धड़ाधड़ रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हैं, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते वरते नहीं है। बस प्रोफेसर जो बता दिया वो कर देते हैं, रटी रटाई बातें सुना देते हैं। उनके पास ना क्वांटम मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग है, ना मॉलिक्यूलर का स्ट्रक्चर का अंडरस्टैंडिंग है।
वो आज भी यही मान रहे हैं कि ऑक्टेट रो सही है या फिर डी ऑर्बिटल सही है या फिर उनको ना मॉरिसन बॉयड का नॉलेज होता है। हाँ, अब समझाता हूँ। पूरे इंटरनेट में यही फेमस है कि अगर आईआईटी का ऑल इंडिया रैंक 1 बनना है तो केमिस्ट्री में मॉरिसन बॉयड पढ़ो। हाँ, फ्री फ्रिज और बहुत सारे बुक्स है। मॉरिसन बॉयड मुझे बहुत बढ़िया लगा है। उसमें सही में केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो 12th में मैं जब नवोदय विद्यालय में था तो आई यूज्ड टू रीड मॉरिसन बॉयड, क्योंकि जो मेरी केमिस्ट्री मैडम थी अनुराधा मैम थी, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल थी। उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया था यू कैन रीड मॉरिसन बॉयड, और लाइब्रेरी में लकीली अवेलेबल था। और मॉरिसन बॉयड बहुत ही साइंटिफिक बुक है। उसी में समझ में आता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर बॉन्ड, व्हाट इज इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड, व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड। ओके, इंट्रा इंटर देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस। जैसे कि हम वाटर को हीट करते हैं तो वो वेपर बन जाता है, तो एक्चुअली में वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक थोड़ी ना होते हैं, H2O थोड़ी ना ब्रेक होता है। उसमें जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर जो वैंडरवाल बॉन्ड है, वो कुछ नहीं टूटता है। मतलब वो एक लेवल पे सारे बॉन्ड टूटते हैं, लेकिन वाटर के जो कंपोनेंट H2O वो नहीं टूटता है। जब हम हीट करते हैं तो वो H2O ही रहता है। अगर H2O टूट गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन निकला तो वो बॉम्ब बन सकता है, ऑक्सीजन निकला तो वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर सकता है। हाँ, देयर इज मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बन जाते हैं। सो इसमें जो प्रोसीजर होता है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, सो अब आगे थोड़ा रेस्ट लेता हूँ, लेकिन बोलेंगे जरूर। I'm not a professional coaching center. Uh, I just explain based on philosophy and the thing that I have read in the Morrison Word. And this is not a scripted video. This is live streaming and random, not any script. Not okay. I need to take a little water and relax, as 32.4 minutes have passed. Okay. So, yeah, the point is nobody joined. It's all right because MIT Open Courseware also has very less subscribers, and the most प्रीसियस थिंग मीन्स सबसे महंगा चीज जो वर्ल्ड का है, MIT ओपन कोर्स, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है मटेरियल, वो सबसे महंगा है दुनिया का। वो फ्रीली अवेलेबल है। हाँ, इंग्लिश में, मतलब बहुत बढ़िया से स्टार्ट होता है। दिस कोर्स इज प्रोवाइडेड अंडर कॉमन लाइसेंस MIT ओपन कोर्स है। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर पढ़ाते हैं, नोबेल लॉरेट लोग भी पढ़ाते हैं वहाँ। The quantum mechanics is taught by Dilbag, Adam Allens, and classical physics is taught by Walter Levin. String theory is taught by a Chinese professor, Li Hong, and quantum field theory is taught by again the Li Hong. And there are some lectures of in Stanford University, and it is explained by Leonard Susskind, but that is not the recommended one because he don't follow pen derivation. He just talks philosophy. So Leonard Susskind is very genius, but that kind of thing I really don't prefer. So because anybody can talk philosophy. Like I am talking philosophy, na. So I am I don't have that much intellect. However, I can teach in
chalkboard like MIT professor also. You can check my videos. I can teach. I have capacity, but right now I don't have that much infrastructure. Okay, and the cameraman. And you can see this video is recorded in uh, very old HP laptop, which floppy disk. It has a CD drive. Okay, I demanded the CD drive initially because CD drive is the most safe. If you are submitting your thesis or article in pen drive, it is given to that. If you use SanDisk, so SanDisk will use that thesis, because whenever you take something, you format the drive. Okay, and after it refilled. So now let's talk about. Uh, okay, I pressed MIT Open Coursera lots, but Indian NPTEL channel is also good. Professor and there is a professor who teaches quantum field theory. I forget his name, but he teaches very well. Okay, he's from IIT Madras. He taught quantum field theory very better than IIT Open Coursera. I will mention the name in the comment section. I need to actually, I feel sorry because he teaches quantum field theory in derivation technique, but his way students actually don't understand his capable delivery speed delivery, because in MIT Open Quiz all the students are from English background. So they respond, they work, they do everything. Let me take 2 second rest. Okay. So nobody joined, but it's fine because I'm not that much a genius person. I am a common man, and my philosophies and my logics are based on ground level understanding. Okay, so my thoughts and philosophy can be ignored also, because my logics and my ideas are purely based on reading material that I have studied. I studied that Morrison Boyd. So in Morrison Boyd only, it was disclosed that how benzene was predicted as closed, because the calculation structure, the Indian stream become like that a snake is holding his back, and that's how benzene ring was discovered, and after the resonance was discovered, and these are quantum mechanical phenomena. The resonance and delocalization is actually the representation of shifting of wave function of the electron. So chemistry is explained by some dot structure, but the actual reason behind the chemistry is quantum mechanics. People think that chemistry is there is a problem in our framework or all over the world framework. People think that chemistry is different department, physics is different department, and in physics also people has divided that this is nuclear physics division, this is quantum mechanics division, this is theoretical quantum mechanics division. But the point is that if you will read NCRT or textbook, all history, philosophy, and everything, and I have read the Constitution of India also, and only India. I haven't touched the Constitution of America, but the Constitution of America is more fair than Indian. Okay, so uh, actually I'm a fast reader and fast learner, and I take 2020. Sometime I sleep for 30 days, 30 nights, just going food, and sometime I don't take sleep also. So I have a flexible way of working. So that's why I'm a fast learner, and as I am from Navodayan background, so
in Navodaya background, we live in a room which has uh, 14, 20 student capacity. Uh, Lower berth, upper berth. So juniors, students of sixth grade, they sleep in. Some people, seniors sleep in lower berth, junior sleeps in upper berth. It should be opposite. But senior is always a senior. They utilize the facility in every field. Okay, research field, in every aspect of life. Every person has his own strength. Some people are more heighted, so they will occupy the material first because they everybody want to occupy the material first. And if people is short heighted, so then he will adjust in wherever. Okay, suppose if we talk for submarine, so I am very fit for submarines because my height is low, so I can sleep in submarine very easily because it has compact space, and even I can go to moon also because if we are constructing Mangalyaan, Moonyan, so I can go there and go to the moon, and I can take the risk of life also. But actually, if we are going to moon, so we will be collaborating with NASA, Russia. We will be working on collaboration, and I can even live in Mars also because I know how to crop the field, how to cultivate land, how to live in a closed chamber. Yeah, I can cultivate even Mars also. I am fit for that. If I got the opportunity to go to Mars, I will prefer to go to Mars with my wife, not a single. Because if I go to the Mars and went to single, so I will die. Okay, the return module will be very risky because I can stay 4 to 5 years in a solitude solitary means akilapan solitudeness with gadgets, with songs, with logics, with principles, with uh, mimicry and some kind of physical exercise. Okay, but if somebody is planning to go into Mars, so he must go with wife because in that case he will populate over there, and we can't depend on rapid expansion. Okay, we have to cultivate the Mars module like Elon Musk with a couple pattern, not the individual. We have to set a team which can cultivate land, but a partner, married couples, because married couples with a good background can take the leadership in every aspect because if we are married, so we are not the single person. We hold the authenticity, respect, and mutual understanding on the basis of trust and loyalty, not the intimacy or fun, but some kind of mutual settlement. So, population model of Elon Musk must be settled based on some kind of monogamy principles. However, Elon Musk itself is not a monogamous person. So I am not complaining, or I am not saying against him. He is rich, he is capable of doing things, and we are human beings,
and practicing polygamy is a natural thing. It's the religious sentiment set the monogamy principles. Okay, but as a human being, we are polygamy. Born to become polygamy because we need to cultivate the best thing because Elon Musk height is good, intellect is good, and he is gym version, he is tech mind, he is billionaire, and he has very logical brain. He is a Stanford dropout in PhD, but I will not drop out. I am not a genius like that Elon Musk. Okay, he is far away. Means I am zero, he is infinite. Okay, so now let's talk about space exploration. Okay, some people are still think that this Earth is a disk, a flat Earth society. The claims of holographic principle and CFT principle says that this universe is a hologram, and the thing is encoded in a two-dimensional surface. So, based on this philosophy, the Islamic beliefs are correct because Islam says that our earth is flat, a disk. Because overall scientific literature says that universe is simulation. The current scientific literature, string theory, and the quantum gravity. Even the professor, I always forget his name, yeah, Italian professor, he is very genius person. Let me search his name, Italian professor, Carlo Rovelli. Okay, Professor Carlo, the leading professor in look quantum gravity. His book on Cambridge monograph. It's this much book, and you will read his the derivative part of the work. I cannot read all because I have limited time. Okay, so his book on Cambridge monograph on look quantum gravity and the string theory is highly appreciable, and it requires a high level of mind. But I really don't agree with his principle that he says that time doesn't exist. Forget time. He has published that is called essay, which got media attention that time doesn't exist. But he himself explained time dilation in length contraction in YouTube video where he explains that time actually exists. If time dilation is there, length contraction is there, and it's a verified phenomena. Okay, the GPS that you are working, the Google Map, it's a very based on time dilation because every day GPS coordinates are matched and corrected with real time issue. So GPS used the time dilation, and astronauts has went to space and checked the twin paradox. It's not a paradox; it's a verified fact. And you won't believe I have checked the time dilation in Indian flight with my Sonata watch. I have video. I had less resources, so I did whatever I could do. I recorded it. Yeah, actually everybody was violating the rules of flight. That everybody was using mobile, everybody was listening, everybody was talking in flight, but that must be not allowed. I don't know why government authority allow the mobile talking. They were talking. I have recorded proof from the flight was from Bhubhaneswar to Hyderabad, Hyderabad to Bhubhaneswar.
I used the Mac my trip. That's why I survived and returned safely, because my cash went ran out and my Aadhaar authentication went ran out. Means I was declared a citizen of I don't know from where. Even I was holding the Indian passport. I went to Italian embassy, that embassy in Telangana state, but they declined my visa on the basis of framing that you are bluff. Means they judged me based on my height and color. That how a short-heighted person can do a doctorate in physics from Indian Institute of Technology, and how he can become an invited speaker in yeah, it conference in Italy. And I was invited speaker because my supervisor and the supervisor give me accepted my conference paper. So I my paper was accepted. There was conference spreading. All the payment was real. Invitation was real. Immigration form was real. Time was there at 10 o'clock. I had the appointment. My name was there, but they framed that you are bluff. Oh, they said that you are bluff. They tried to seize my documents or private gundas. So, do you think I am weak person? I post that I will join politics because I have to take revenge. I clearly say that this is a nepotism. Why you can't believe a person who has a potential to hold lot of things? Okay, so it's a clear cut of revenge. Why I want to take revenge is not a good policy, but sometimes we have to take the revenge also, because if you will not take the revenge, you will be treated as a weak person. Okay, weak person, and it's good that they didn't accepted my visa, because if they would have accepted my visa, Shenzhen visa, so, and they said that you have to go to Kolkata for Shenzhen visa. But then if they have cleared mentioned that I should go to Kolkata, then why they accepted my fees? Why they accepted my fees? I booked all 1,80,000 premium tickets, flight tickets of Air India in advance. I booked the hotel of Italy in advance with complete payment, because they accepted my form. Why they accepted my form? They are Italian embassy. They don't have a simple AI to filtrate that this person is from Odisha, so this person is not eligible for visa appointment at Telangana. He must go to Kolkata. The Supreme Court clearly says that any person can apply visa from any state. It's a direct guidelines of Supreme Court of India, and the Italian embassy is under India. They are living inside India and ruling their authority. Do you think if Italy will do Italian European embassy will do with this with me, so will I allow their product in India? I will remove all the foreign products from India. Okay, all Italian, all American. But Americans are good. The YouTube is American product, and I am talking freely with the internet. So no people is wrong. Yeah, the पुअर इंडियंस जिनको कुछ लॉजिक नहीं है, आता नहीं है, वो जॉब में चले जाते हैं एम्बेसी में,
एम्बेसी में लीडर बन जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन जाते हैं. They actually don't allow me to talk with consulate. If I have paid the fees, I have paid the 9,000 rupees premium charges. If I paid the 11,000 rupees premium charges, I have paid got the everything. So they must at least allow me to talk to consulate, because who is security guard to block me with gun? Who is security guard? A security guard who don't even have logic, tendency, don't have power, they just have gun. He was not from Indian army. He was wearing some kind of dress. I'm sure they are from Ministry of Affairs, okay, Foreign Affairs. Their IPS, IES, or maybe whatever. I don't accept their dignity or their post. I clearly say that if any kind of this type of nepotism occurred with me, I hold time bomb, I hold atomic bomb within a second. Open Harity took years to build atomic bomb, but I will take only 1 minute uh, to build an atomic bomb. Okay, an atomic bomb is different from atomic bomb, time bomb. An atomic bomb is a kind of humor bomb. Comedy itself becomes sometimes bomb, like Bhuvan bomb. It's not a bomb. It will not kill the people, but actually it will make the people in right path. Okay, maybe I am talking very seriously, but my space and logics are with smile, because it's a kind of scientific humor. You may be not understanding my humor, but a qualified person with a good temper, with good listening power, will definitely understand my humor. Okay, so sometimes nepotism. So army people, they are having more height, they are having more, they become security guard, and they are not actually a good power position. They are chamche. ओके, उनके जैसा पुलिस पर्सन कोई नहीं है. वो प्राइम मिनिस्टर है किसी को बचाने के लिए. वो बचाते बचाते कुछ नहीं है. बचाना होता तो राजीव गांधी को नहीं बचा लिए रहते. बस क्लेम करते हैं कि हम इंडियन आर्मी है, हम सबको बचा लेंगे. कि वो मॉक ड्रिल में दिखाते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड इतने जबरदस्त होते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर को सर्कुलेट कर लेंगे और अपनी जान दे देंगे. अरे, देर आर न्यूज कटिंग्स वेयर मदर गिव their lives to save a child, a different child. They are real patriotic. They should be awarded. They should be given money. But they becomes media cutting. They lost life. They lost their body, and they don't get anything. And the higher officer of Indian Army. Okay, I am not disrespecting Indian Army or anything, but all the army mindset, they don't have any skills and any power. They just when they are asked to fire, they fire. They okay. I have written verbal statements from Indian Army Gorkha Regiment that when I was in Karnataka, that is Karnataka Battalion NCC. So he said that when the war happens, so they are not actually that much brave. They also fear from death, so they have strict order to fire. So they technically don't fire on human being, because they also don't want to kill. They just they got the order to fire, so they fire in air, so that enemy get haunted, and he they actually try to save their life. Okay, some people get killed and mortified, and most of the case, if a person
a low rank person killed get like Veer, the current Veer Jawan, okay, current army recruitment. Okay, so this is a private army privatization. Okay, so currently we are under dictatorship because we are recruiting army personnel for 4 years, and we will once they serve the Indian army, they will be removed from the Indian army. Then they will take the license of petrol pump, security personnel. So they will become the what called it private army, because now they are not government official. They got the offer letter of Veer Jawan. So Rahul Gandhi is raising that कि 2 साल के लिए आर्मी में क्यों रख रहे हो, परमानेंट रखो. तो एक्चुअली में हम समाज समझ ही नहीं रहे हैं कि ये किसी तरह से प्राइवेट आर्मी बनाने की, डिक्टेटरशिप लाने की वो योजना है, और ला दिया गया है डिक्टेटरशिप. भारत पूरी तरह से डिक्टेटरशिप राष्ट्र है. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा ये जो रूम है, यहाँ पे ना फ्रेश एयर आने की फैसिलिटी है, ना सनलाइट आने की फैसिलिटी है. एक बंकर में बैठा हूँ मैं. ओके, मेरा लाइव लोकेशन भी देख लो, मैं बंकर में बैठा हूँ. इंटरनेट केबल खींच रखा हूँ, बहुत लो बैंडविड्थ का है, बहुत पेमेंट दे रखा हूँ. जो ध्रुव आरटी है वो जर्मनी में बैठ के यूट्यूबिंग करता है और बहुत हाई ग्राफिक्स वीडियो बनाता है, और उसकी वीडियो हो सकती है स्क्रिप्टेड हो. मेरे वीडियो को कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती है. मैं ओपनली बोलता हूँ और मैं सच बोलता हूँ. मेरे लॉजिक्स कभी भी रॉन्ग हो नहीं सकते. ये जो प्राइवेटाइजेशन आयरनी जो चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है, ये एक्चुअली श्री नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं. बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे पर्सन है. ओके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी जी डिक्टेटरशिप राष्ट्र. हो सकता है मेरे फेसबुक कमेंट में होगा कि डिक्टेटरशिप चल रहा है, लेकिन जो अभी जो डिक्टेटरशिप चल रहा है वो हिंदुइज्म का डिक्टेटरशिप चल रहा है. किसी तरह से राष्ट्र में हिंदुत्व की सरकार लाने की कोशिश की जा रही है. हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया जा रहा है. मैं सही बात कह रहा हूँ कि मैं किसी धर्म या जाति या किसी को अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हिंदुत्व है और सनातन है उसको तो कोई समझता ही नहीं है. सनातन प्रिंसिपल तो बहुत ही बेस्ट प्रिंसिपल है. सनातन जीवन बहुत ही अच्छा लाइफ है, लेकिन सनातन प्रिंसिपल्स को जो हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया गया है, और श्री राम के नारे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन श्री राम के साथ जब ड्रिंक करके जो माँ बहन वाले नारे लगाते हैं ये लोग, वो एक्चुअली वे गुंडे हैं. ये 10 रुपए के लिए गाली देना शुरू कर देते हैं, और एक्चुअली उचका दिया जाता है इन्हें. इनके घर में किसी को मार देंगे तो फिर ये गालियाँ देना शुरू करेंगे, और फिर एक्चुअली फिर ये झंडा उठा लेंगे श्री राम का या फिर इंडिया का. अपने आप को राष्ट्र, अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने टेंशन को जस्टिफाई करने के लिए कोई झंडा उठा लेंगे किसी कलर का. और एक्चुअली ये सनातन या हिंदुत्व को सपोर्ट नहीं करते हैं. ये लोग 10 रुपए 20 रुपए में बिके हुए शराब वाले गुंडे हैं. मैं पब्लिकली बोलता हूँ क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर में होटल में जब पब्लिकली लिख चुका हूँ, तो फिर मैं यूट्यूब में क्यों डरूँ. बोलो, अब डरना है तो आ जाओ, भिड़ लो. हमारे पास भी अपने टेक्निक्स है, अपने राइट्स है, अपने साइंटिफिक मेथड्स है. आप टैक्टिकल वार कर रहे हो अपने पावर के दम पे. आई विल डू टैक्टिकल वार बेस्ड ऑन माई ब्रेन. इट्स नॉट ए वार, इट्स ए स्टैंड अप कॉमेडी ना. मैंने बोलकर दिखा है, ये स्टैंड अप कॉमेडी है, ये कोई रियल चीज है नहीं. स्टैंड अप कॉमेडी है भाई. इसको रियलिटी लोगे तो आपकी गलती है. मैं तो स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, ठीक है. स्टैंड अप कॉमेडी है. हो सकता है एक भी लाइक नहीं आया, लेकिन हो सकता है एक भी देखे नहीं होंगे. कैमरा क्वालिटी तो है ही नहीं ना.
तो प्रॉब्लम है भी नहीं ना। स्टैंड अप कॉमेडी जरूरी थोड़ी ना है कि हम बस्सी जैसा ही फेमस हो जाए, क्योंकि बस्सी बस्सी है भाई, उनके पास स्किल है, टैलेंट है, हमारे पास इतना टैलेंट थोड़ी ना है। ओके। हाँ, वो गालियाँ भी देते हैं और मैं एक्चुअली अवॉइड करता हूँ पब्लिकली गाली देना, क्योंकि हाँ, गालियाँ तो मैं बहुत देता हूँ लेकिन सीसीटीवी ऑन कैमरा में गाली देना तो बचता हूँ, क्योंकि फिर वो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देगा। और टेक्निकली कर्मा बैक्स ना, एवरी एक्शन है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैं अगर सोशल मीडिया इंटरनेट में गाली दूंगा, तो फिर मुझे भी इंटरनेट में गाली आती, हाँ मुझे तो आती है, मुझे तो मैं तो अकाउंट्स बना रखा हूँ बहुत सारे सोशल मीडियाज में, और रियल नेम से तो लोग कुछ भी वीडियो भेज देते हैं मुझे। मैं तो देख के बस खुद एंजॉय करता हूँ, क्योंकि बात यह है कि यही तो साइबर क्राइम है, यही तो साइबर क्राइम का डेटा है। वो डेटा दे रहे हैं, मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना कि 60 टीबी का डेटा यूज करूंगा, वो तो मैं मेरे को इंटरनेट स्पीड दो, 1 लाख टीबी का डेटा सबमिट कर दूंगा। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम क्या है? लोगों का फंसाने के लिए, बरगलाने के लिए अपने आप को अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी चेंज कर दिए हैं। हाँ, रहेंगे मेल लेकिन अपना इनकम के लिए वो अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन बाई कर देंगे, जो फेक बुक्स लगा लेंगे, फेक सब चीज फेक रहेंगे स्ट्रेट। बट अब पैसे के लिए क्या नहीं कर रहे हैं यार, इंसान पैसे के लिए क्या नहीं कर रहा है। जो लोग दान करते हैं, सेवा करते हैं, वो लोग तो भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट्स में ट्रैप्ड हो जाते हैं। कितना बढ़िया इंस्टीट्यूट है भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट, आईआईटी भुवनेश्वर के करीब है, और बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ। ठीक है, भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट आईआईटी भुवनेश्वर के पास में है, और फाउंडर का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा इंस्टीट्यूट है भक्ति वेदांता। ये कॉमेडी में है, ये सच है। ठीक है, तो मैं वहाँ गया हूँ और देखा हूँ कि वो कैसे आ, सेवा करते हैं, कैसे आ, भगवान, मतलब जो भी आ, टेम्पल है, और जो मूर्ति है उड़ीसा का, जो ट्रेडिशन है उसको वो फॉलो करते हैं, बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। तो और उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की एक बहुत अच्छी किताब लाई थी लाइब्रेरी में, मतलब लाया थे लाइब्रेरी में, और इट वाज अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, सो आई रीड द इंडियन ऑथर। However, that quantum mechanics book didn't had the mathematical stuff that I always prefer, because my preference is always mathematical approach. Because philosophy can be anything. You can defend anyone with any philosophy by his age group, mental awareness, and lot. But voice modulation, yes, yeah, it has voice modulation. But the thing is, this is live, and it's 1 hour 8, so I have to stop with some conclusion. My conclusion, the concludatory remark for this stand-up comedy is live life with principles, with ambitions, with motto, and don't run for lots of materialistic things. Settle yourself in less, uh, less things, and as the age grows and you are live your life with honesty and manipulative, because we need to manipulate sometime. Okay, manipulative behavior is very necessary, it's a cheat code. If you don't manipulate, nah, you will be killed only. Okay, so the thing that I did in Telangana embassy, it was a manipulative behavior. I did everything in social media, under CCTV.
because my rights, my visa was rejected based on fake allegation. He said me that you are bluffing. If I am bluffing, then how I am telling this video live? This is live, no camera trick, no anything. A simple, I don't know the resolution of the camera, the thing that is there. Okay, if you don't believe, you can give me a call also. Okay, I will show you the mobile screen. This is like this for 446, 456. See, 456, 24 March. Okay, this Renault 456, 24 March. Screen lock is there. Laptop time is also 456, and it may take time to get uploaded because it's live. So I believe somebody is viewing, but I don't know why nobody joined. So maybe it's a data manipulation on my internet schedule, but I'm not sure. But I believe the YouTube live because YouTube is good. I trust YouTube. Thanks, Jai Jai Bharat. And the United Nations must be strengthened.